Before we start our program today, Brahma Kumari's organization 1936 में established हुआ सिंध हैदराबाद में. 1950 में ऑर्गेनाइजेशन भारत में ट्रांसफ़र हुई तो इसका फॉर्मली नाम जो रखा गया ऑफिशियल नाम एंड इट इज़ नेम्ड एज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट में ब्रह्मा कुमारीज के नाम से जाना जाता है. ब्रह्मा कुमारीज बेसिकली इसीलिए कहा गया क्योंकि जो द फर्स्ट वर्ड इज़ ब्रह्मा, ब्रह्मा इज़ रिलेटेड टू द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दादा लेखराज. क्यों ब्रह्मा उन्हें कहा गया, ब्रह्मा बाबा क्यों कहा गया? हमारे यहाँ किसी भी चीज़ के क्रिएटर को, रचता को ब्रह्मा कहते हैं, क्योंकि जो दादा लेखराज जी थे इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर थे, इसीलिए हम उन्हें प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं. ब्रह्मा कुमारीज इसीलिए कहा गया क्योंकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड आज 137 कंट्रीज़ में इसके कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर्स हैं और भारत में यहाँ पर हमारे लगभग 5000 सेंटर्स हैं, ब्रांचेस हैं, जहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन देश और विदेश में वैल्यू बेस्ड सोसाइटी के लिए, निर्माण के लिए कार्यरत है. ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन को यूएन द्वारा 1982 में 7 पीस मैसेंजर अवार्ड्स भी मिले. ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन का इकोसॉक एंड यूनिसेफ के साथ एज एन एनजीओ कंसल्टेटिव स्टेटस भी है और यहाँ पर लगभग इसकी 20 विंग्स बनी हुई हैं राज्य का एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत. ये 20 विंग्स हमारी सोसाइटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम कैसे मेडिटेशन को यूज़ करें, कैसे मेडिटेशन द्वारा हम अपनी पीसफुल लाइफस्टाइल बनाएं, कैसे आने वाली जो भी बातें हैं, सिचुएशंस हैं, टाइम जो चेंज हो रहा है, अप एंड डाउन्स हो रही हैं चीज़ें, बहुत सारा इंटरनल जो सिस्टम है उसमें भी बहुत सारा इमोशनली अप एंड डाउन हो जाता है. तो वो सब होते हुए भी उन चीज़ों को कैसे हम ब्यूटीफुली हैंडल करें, पीसफुली लीड करें और कैसे कामनेस के साथ हम उसके सॉल्यूशंस बाहर लेकर के आए, उसके लिए यहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है. मेडिटेशन को अगर मैं एक लाइन में डिफ़ाइन करूँ तो मैं कहूँगी कि मेडिटेशन इज़ जस्ट अ सिंपल प्रोसेस जहाँ पर हम अपने थॉट्स को चैनलाइज करते हैं इनटू वन डायरेक्शन. ये ब्रह्मा कुमारीज का थोड़ा सा शॉर्ट में क्विक हम जाना हमने. इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम सभी एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे. सभी करेंगे? यस और नो? ठीक है. इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, आप सभी को फ्लावर्स पसंद है? फ्लावर्स पसंद है? आपने क्या करना है, वो फ्लावर का नाम आपने अपना नाम बनाना है. यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज, फॉर एग्जाम्पल आपको रोज़ पसंद है, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, हेलो आई एम रोज़, ओम शांति, मैं रोज़ हूँ. फिर आपने सेकेंड थिंग डिस्कस करनी है उनके साथ, आपको वो फ्लावर क्यों पसंद है. आपको वो फ्लावर उसकी क्वालिटी की वजह से पसंद है, फ्रेगरेंस की वजह से पसंद है, या उसके डिफरेंट यूटिलाइजेशन है उसकी वजह से पसंद है, आपको क्यों पसंद है वो आपने डिस्कस करना है. थर्ड थिंग आपने और डिस्कस करना है कि वो जो फ्लावर की क्वालिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फ्लावर में उसका कलर पसंद है, आपको उसका रेड कलर पसंद है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने उसको अपनी पर्सनालिटी से कोरिलेट करना है कि मुझे उसका रेड कलर पसंद है क्योंकि वो कलर इतना वाइब्रेंट है. तो ऐसे ही मेरी पर्सनालिटी इतनी ब्यूटीफुल है, मैं जब किसी भी रूम में एंटर करती हूँ तो वो उसका ऑरा, उसका वाइब्रेशन सारा चेंज हो जाता है. आप अपनी पर्सनालिटी के साथ उसको कोरिलेट करेंगे. थर्ड थिंग. एंड द फोर्थ थिंग, लास्ट थिंग इज़ आपने एक दूसरे को बहुत ब्यूटीफुली दुआएं देनी है, ब्लेसिंग्स देनी है. ठीक है. आपको कन्वर्सेशन 1 to 1 करना है, ग्रुप में नहीं करना है. ओनली 1 person with 1 person ओनली. दो के ब्लेसिंग्स. ब्रदर आप किन्हीं के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं. यस आप भी हैं प्लीज़. तो कौन कौन से फ्लावर्स मिले आपको?
रोज, येलो रोज, सनफ्लावर, जैस्मिन, लिली, हाँ, पॉपी, लोटस, जैस्मिन। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत सारा बुके है यहाँ पर, है ना? सो जो फ्लावर्स आपको मिले उन्होंने क्या क्वालिटीज़ बताई, क्या शेयर किया? हम्म, हम्म, रियल है, जेन्युइन है, पॉजिटिवनेस, कामनेस, वेरी नाइस, एवरलास्टिंग, ब्लेसिंग्स लास्ट। अच्छा, जिन्होंने ब्लेसिंग्स दी कैन रेज योर हैंड्स। कोई भूल गए? नहीं? अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सो हमने ये जो शेयरिंग की, हमने इसमें ये चेक किया और देखा कि एक छोटी सी चीज़ है, अगर हम उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं तो हमें वही चीज़ अट्रैक्ट करती है जो एक्चुअली मेरी भी क्वालिटी है। तो अगर मुझे कोई फ्लावर भी पसंद है, इट मीन्स कि उसके अंदर की जो वैल्यू है वो मुझे अट्रैक्ट कर रही है। सो मैं हर छोटी सी चीज़ में, कहीं चाहे कोई छोटा सा भी काम करूँ, छोटा सा कार्य करूँ, छोटी सी बात चीज़ को हैंडल करूँ, लेकिन वो हैंडलिंग में मेरी उस वैल्यू को मैं और डीपली यूज़ कर पाऊँ, उसके लिए मैंने छोटे छोटे रिफ्लेक्शंस करने हैं। तो आज का हमारा जो ये ब्यूटीफुल डायलॉग का प्रोग्राम है, इसमें हम यही चेक करने वाले हैं। लीडर बनाए नहीं जाते, लीडर बने बनाए भी नहीं आते, लीडर जनरेट होते हैं, है ना? अपने आप अंदर से उभर करके बाहर आते हैं उस सिचुएशन में जब हम उनको यूज़ करते हैं, अपनी वैल्यू सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो अपनी वैल्यूज़ को और हम कैसे निखारें, ऐसे ही एक ब्यूटीफुल डायलॉग को आगे कंटिन्यू करेंगी। हमारे साथ सिस्टर हुसैन है। सिस्टर हुसैन से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। सिस्टर हुसैन पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर डेडिकेटेड रूप से अपनी सेवाएं ओम शांति रिट्रीट सेंटर में दे रही हैं। आप यहाँ पर सीनियर फैकल्टी हैं और कॉरपोरेट में मैनेजमेंट ट्रेनर भी हैं। यहाँ पर मल्टीपल वैरायटी टाइप की सेवाएं आप देखती हैं और आपने प्रोफेशनली एंड एजुकेशन में आपने एमबीए किया है आपने, एंड मल्टीनेशनल कंपनी में देन जॉब भी किया। उसके बाद आपने अपना जीवन सरेंडर किया है। तो सिस्टर हुसैन को मैं रिक्वेस्ट करूँगी, सिस्टर आप आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। Om Shanti and good morning. So, just now we exchanged flowers, blessings and a lot of fragrance. तो इस कमरे में भी क्या हो गई है? बहुत खुशबू फैल गई है। तो इमेजिन अगर हम अपने वर्क कल्चर में, अपने फैमिलीज़ में ऐसी खुशबू फैलाएं, इतनी फ्रेग्रेंस फैलाएं, तो फिर कैसा रहेगा? It will be very nice, right? So this is why we are here together कि हम अपने जीवन को भी कैसे खुशबूदार बनाएं। और ऐसा नहीं कि हम काम कर रहे हैं, वी आर एट वर्क, तो हम अपने वर्च्यूज़ को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम अपने वर्च्यूज़ को यूज़ करते हैं तो हम अपने कार्य क्षेत्र को, दैट मीन्स माई वर्क प्लेस, माई प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो बिकम्स एनरिचिंग, बिकॉज my principles, my virtues are in sync with what I do, then I'll be happy. If my value system is different and the work that I'm doing is different, work का मतलब ये नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन किस इंटेंशन से कर रही हूँ, उसके पीछे का मतलब क्या है, वो उसके लिए मुझे किस प्रकार के वर्च्यूज़ या कोई और चीज़ तो नहीं इस्तेमाल करनी पड़ रही। तो अगर मेरा सिस्टम, वर्च्यूज़ और वैल्यू सिस्टम मेरे वर्क से मैच करता है और मेरे कार्य में वो प्रैक्टिकल में आ जाता है, तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? हाउ विल दैट पर्सन बिकम? ही विल बिकम अ नेचुरल लीडर। व्हाई? बिकॉज what he has inside, that is what he's speaking, that is what he's doing, that is what he is sharing with others. So there is a complete sync of my thinking, speaking, seeing, doing, and therefore this will result in, ये किस चीज़ में रिजल्ट करेगा? अगर कोई व्यक्ति जैसा सोचता है, वैसा ही बोलता है, वैसा ही करता है, तो वो
उसका रिजल्ट क्या होता है? उसकी पर्सनालिटी अच्छी होती है और क्या रिजल्ट होता है? थिंक अबाउट इट, ही विल बी अ रियल पर्सन. आप उसको सदा ट्रस्ट करेंगे या नहीं? आप सोचिए कोई बहुत मीठा बोलता है, मीठा बोलना, बीइंग स्वीट इज अ वर्च्यू, लेकिन वो सिर्फ मीठा बोलता है, ही इज जस्ट स्वीट, तो आप किसको ट्रस्ट करेंगे? राइट, आर यू गेटिंग इट? तो हम लीडर तब बन जाते हैं जब हम इन सिंक रहते हैं चीज़ों से. आई एम इन सिंक विथ थिंग्स, राइट? तो इसीलिए हमें देखना है कि क्या हम जो सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हम एक्चुअली करते हैं, वो एक है. अब वो एक कब होगा? हाउ विल इट बिकम वन? When I am working from a space of virtues, I am working from a space of love, I am working from a space of peace. So when I am using my virtues, then only will it be in sync. Otherwise, अगर मेरे मन में कुछ और चल रहा है तो मैं बोलूँगी थोड़ी ना. If maybe I am going through thinking bad things, will I say it in public? If you will say it, you will regret it. So, this is what we need to understand, that we need to bring out the leader that we all are. And that leadership is actually hidden with, we are not using our virtues, all of us, together. ठीक है? तो इसी के ऊपर हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है, लीडरशिप कोई मैनेजमेंट नहीं है, लीडरशिप कोई ओहदा नहीं है. वो एक ओहदा है, लेकिन लीडर किसको कहा जाएगा? भारत में क्या कहते हैं? कौन जीतता है, कौन लीडर होता है? बताइए, कौन होगा? बताइए. ओके, और जो अंदर बाहर से साफ है. और उसकी क्या निशानी होगी? आप ही बताइए. जो he brings everybody together in a positive way. और leading by example. What else? और बताइए, बहुत सिंपल सी बात है. और भी बताइए, आप बताइए मैम. या राइट, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस पॉइंट, जिसको हम कहते हैं कि जो सबके दिलों पे राज करता है. ठीक है, अगर कोई, if somebody is ruling the hearts of the people, he may not be having a post maybe, but he becomes a leader which people will follow, right? Because of the integrity, because of the virtues, because of being authentic. Correct? Yes? Does that make sense? So we are here to talk about how we all can become leaders. Whether I am at a home, whether I am doing some important work at my workplace, but I can still be a leader with or without a post. Yes? I can lead by an example. I can lead by living a virtuous life. Okay? So we will all discuss it, and before that we have a very special sister with us. Before we get into the dialogue, I would also request, we have Sister Luciana from Brazil. Sister Luciana is there, so we welcome her. So I'll give a short introduction of Sister. She is from Brazil, and she is coordinating our centers in the whole of Brazil. She has been in this knowledge since the early 1980s. And, you know, they are the examples that from a young age they got this Raj Yoga meditation knowledge, and they have lived by example and thereby leading other people to live a similar life. So they follow, she followed the principles of the Raj Yoga, teaches Raj Yoga, gives different lectures, and right now we have a group from Latin America which has come, which is about close to 100 people
more than 100 people who have come from Latin America and 20 from Brazil to learn meditation. So there's a retreat going on. So after, I would want Sister Luciana also to share some points, and then we will break into a dialogue. Okay? Thank you so much. Thank you to everyone. It's a pleasure to be this morning here with you in the week of that we celebrate the Women's Day. I've been coming to India for the past almost 50 years, every year, so I'm quite acquainted to your culture and to all the systems not just of Brahma Kumaris, but also from India. And I've been participating from the Brahma Kumaris International Group, what is called the Shiv Shakti Leadership. It's a group that was created in the Brahma Kumaris office in the United Nations in New York, and we have the representative for all the regions and all the countries around the world. I am the representative for Brazil, and also one of the representatives for Latin America, together with another sister from Costa Rica. We are two representatives. And this movement has three main principles. Because when we come to think about leadership in terms of the feminine power, what is different? Different from the leadership from what they say in the world. Because we don't want to replace men, right? We don't want to become like men, right? We don't want to have the same kind of leadership. So what is special in our leadership? And in our movement, there are three main qualities that we have to pay attention and develop. So, first quality is that as a Shiv Shakti leader, I am not alone. I'm not just the one who does everything by my own impulses, my own understanding. But I allow myself to be a clean instrument so that some divine energy can also guide me, can also inspire me, can also, it's a kind of, you know, you have to develop your intuition, go beyond just of the ordinary reasoning and allow this divine energy to touch your decisions. Because leadership mainly means to take decisions. So if you take wrong decisions, you are going to regret afterwards. So to have this power to internalize what God wants from me at this situation, what God says about my behavior at this moment. So this is the first principle. Do you like it? You like it? Good. So the second principle is about nonviolence. Because leadership has been associated with the masculine power. And masculine power has a violent authority. So when we become leaders, we should not reproduce this pattern. It has to be different. It has to be, it's not delicate in the sense of being weak, but it should be full of virtues or with qualities like we have said before. So the second quality is a non-violent authority. An authority that you have clarity. Clarity is very important. And clarity comes cleanliness. Cleanliness from the heart, cleanliness from your thoughts, cleanliness from your, your feelings. But also, this authority comes through having a courage,
how many of you feel that you have this Shiv Shakti quality of being courageous? Just the fact to transform yourself, just the fact to choose the right behavior, it's already a sign of courage. And the third quality of this feminine leadership I like very much is to replace the I for the we, which is the principle of living in community. Nowadays, people have been living more and more isolated. They want to have their own apartments, they have to have their own lives, they do their home office, you know, they don't interact. Just yesterday, I was reading something in the social media, and it was showing how many women nowadays, they don't want to get married, they don't want to have family, they, you know, they just feel that they are sufficient. And I'm not saying that this is right or wrong. What I'm saying is that we have to spread our hands and our arms to work together. Very easy to work alone. But you grow and you learn when you interact with others. Because it's with others that I see your differences. It's with others that I see that you think different from me and I have to adjust. It's with others that I see that they have some qualities that I don't have. So instead of having jealousy, I try to develop these qualities. Other people are mirrors to us. If we just live alone, we don't progress. So the Shiv Shakti Leadership Project of Brahma Kumaris, that it's established in the United Nations, but it's spread around the world, has these three main principles. So which are them? First, to be an instrument, to be a Shiv Shakti, an instrument of the divine in taking your decisions. Second, to have an authority, but an authority that is based on non-violence and on virtues. And third, to learn to live in community, in groups, to work with others. Replace the I by the we. Do I have one more minute? Yes. Okay, this is what Brahma Kumaris in the United Nations is working with. You had a retreat with them last year here in the month of February. Yeah. Okay, but there is one more thing. I'm seeing some younger girls there and here, very nice. You know, I'm quite a courageous person. First time I came to India, it was 1978. I was 23 years old, and for 2 months I traveled alone in India. And I didn't know anything by then. And even up today, people ask, how could you travel, you know, alone without knowing anything and so on? And I think that it's very, very important that we believe on ourselves. Do you believe on yourselves? Yes. Yes? You know, because this inner strength is so important to be someone that can face all kinds of situations. So many things we are going to encounter in life, isn't it? How many problems have you had in your life? Countless, right? So many situations. And I want to tell something to you, especially to the younger ones. Do you know that
70 to 80% of the people who develop mental problem and emotional problem are women. Do you know that? Yes. And why? Why? Majority of the people with emotional problem are women. Why? They have overthinking, good answer. They are dependent on others, good answer. They have to work more, maybe, house and job, and so they take more stress, good answer. They're not emotionally independent. They are not emotionally independent, but I think that all of this is connected, but the main reason is that they try to please everyone. Yeah. They sacrifice their feelings, their ideas, their points of view to please the children, to please the boss, to please the husband, to please society. So take care of this. I'm not saying that you should not be someone that it's loving. I'm not saying that you should not be someone who mingles with everyone, who adapts to the situation. We should develop these qualities. But put yourself as the priority in your life. There is no one more important than you. So give time to yourself. Give attention to your feelings. Just think about your future. Think about the purpose of your life. Because if you are okay, everyone and everything around you will function better. Thank you. Very, very beautifully shared. Thank you, Sister Luciana. And I think she really has given us a lot of food for thought, you know, that is going to go, of course, when you will be taking back, and also for the little reflection and thinking that we'll have right now. So thank you, Sister Luciana. You really set that, you know, context and in a very right direction. So since we have time, what I think is that I'm going to give you 3 questions. And I want you to first think on your own. And then probably wherever you're sitting, you can share so that everybody gets a chance to share, and then we will share it in the group also. Okay. So I think the first question that we have is that as a woman leader, do you think that it is possible to lead by virtues? Do you think it is possible to lead by virtues? If yes, what is the most important virtue or virtues needed If no, what is the challenge? And how can it be overcome? And the third question is, what role does or can spirituality play in making women lead from within? What role can spirituality play in making women lead from within? So I hope this is clear. Number one is that if you believe that women can lead by virtues, if yes, then what is that one or maybe two virtues you think are most important to lead? If no, then what are the challenges?
and how can we overcome them? And the third is, what role do you think spirituality plays in making leaders, women lead from within? Is that clear? आपको सबको ये मंजूर है? ठीक है, तो हम 2 मिनट पहले खुद इस पे रिफ्लेक्ट करते हैं सभी हम, और अपनी अपनी नोटपैड्स में या अपने चिंतन में ही हम इन बातों को लेकर आते हैं, और उसके बाद हम फिर अगर हमारे पास टाइम है तो हम सभी उसको शेयर करेंगे. ठीक है, तो वी लेट्स टेक हाउ मच टाइम, अबाउट लेट्स टेक 5 minutes, आई थिंक 4-5 minutes, और हम अच्छे से उसको सोचें, अपने जीवन के एग्जाम्पल्स को देखें, और इसमें अगर आपको कोई एग्जाम्पल देना है तो वो भी आप सोचें रियल, उस पर रिफ्लेक्ट करने के बाद फिर हम इसमें आपस में इसकी चर्चा करेंगे. Right, that is our strength, inside strength or core. So starting from the day when you're starting, the baby is crying, we have to pack the lunch box for it, and we have to prepare for the exams also. The exams are going on. If the mothers are here, they will be understanding what I'm trying to say. Husband is going to office, me also coming to the office. So this all things are pulling us behind, that how can we manage our time, how can you do the things in a right way. And again, whenever you are coming to the office, at that point, whenever you are sitting in the cab or thing, we are switching our mind, and we are thinking about what should be done in the office time. So we are living 2 to 3 4 different types of life. So 9 to 5 we are living a office life, and again going back to the home, we are again living a baby life or a family life or mother life we're doing. So these things, it's like many times we are seeing the posters now, whenever a boy or a man is running towards a success, he is running alone. But whenever we are running with loads like washing machine, fridge, baby, husband, mother-in-law, father-in-law, our parents, our personal health. So to overcome everything, I think the inner strength, core strength is really required. If we are positive from inside, then only we can overcome the things. But if we are negative from inside or we are weak from inside, then we can't do everything in a regular cyclic way, 365 days round the clock. So I think inner strength is more required. If we are positive from inside, we can do everything. Like we can see that who is our prime minister, who is our last time, who is our president, Draupadi Murmu, we can say. She is basically from Odisha. She is from a tribal area. So, color, complexion, education, and where we are coming from, that's not important. What we are inside, if we are reflecting in a proper way, so we can lead it. So, yes, by the virtue, we can lead the leadership role. The second thing is, uh, yeah, the inner strength. And one more thing is, like whenever we are speaking, because as a woman we are having thousands of mood swings every day. So once we'll speak, it will come outside and we can take it back. So before speaking, we have to think, we have to connect our mind with the tongue. So if it is well connected, if you're thinking, is it needed to tell these things right now, or we can avoid this one. So this may also maintain our leadership quality, and we can also save ourselves from the difficult situations. So one thing is maintaining the core strength, and second one is your think and speak. This is the most important thing as you're working in industry. I think these two are the main important thing which we should be concentrating on. The second thing is what we can do, what the spirituality can improve ourselves. So as we can see, the meditation is the main part. So a example I'm giving, whenever you're seeing the reels, no, whenever you are seeing some meditation things, it is giving the calmness inside. But whenever you are seeing the fightings and any other galis and all, so it is giving a very harsh thinking towards our mind. So
always be mindful what you are seeing, what you are watching and all. So always be a part of a positive thing, be a part of a spirituality. So meditation, whatever kind of meditation you like. So meditation is, for myself, meditation is like speaking with my daughter, a very in a calm space. We are listening to the music what we like, and at least speak with your whoever you want to speak. Just speak for 5 to 10 minutes. It's act like a meditation for me, because I need to go for a 9 to 5 job again. I have to do a part of my mother. So what the other thing I can see, that is, don't take stress. Work will be going on, but don't take that much stress that it will hamper your health. So first of all, you have to take care of your health, then we can go forward. So health and meditation and spirituality, these three things if we'll be maintaining, then it will help our personal growth as well as professional growth. Thank you. Thank you so much for sharing very honestly. And when she said the image of a man and the image of a woman, could you imagine it? So she said a man, when he's running alone and, running fast. But if the woman is running, then she has a washing machine, a refrigerator, a crying baby, a husband, a mother-in-law, a father-in-law, everybody attached, and yet she's running towards her career goal. So this is a reality that you have really, with an imagery, you have really given that, and very, very honestly you shared. So just for people who have joined now, I'll repeat the questions that we have, that we have reflected and that we are sharing. So number one question that we reflected on, and that is this, that what sharing is happening, is that do you think that women leaders can lead by virtues? Can they use the virtues in their leadership? If yes, what is that one virtue that you think is most important? One or more than one virtue that you think is more important? If you think no, then what are the challenges and how can we overcome them? If you think no, it cannot be done with leadership with the virtues, then what are the challenges, why, and how can we overcome them? And the third is, what role does spirituality play in making women leaders lead from within? 12, yeah. If I can leave 5 to 12. So these are the questions that we have. And okay, so I would just again want more people to share, and I would want you to make it a little crisp so that everybody has a chance to share. Okay. Om Shanti to everyone. I am Indu and I am working in Mitsuba India Private Limited. So along with me, we have 5 more members present over here, and all are female. And like the question, as it was quoted, and the woman already replied on that, I am very much agree to that which she said, because she has like spoken about the virtue of inner strength. Apart from that, I would like to address one more thing, that yes, inner strength is more important. Along with that, I would say that the courage from within is also important. Because I have seen the women over here that they have the will to do, they have the knowledge to do, and the skills also, but the courage from inside is not there. Because why? Because they are thinking about the society, that what they will think about us. So like the external parameters are affecting them. Because of that, they are not growing. They are not thinking that like until unless they will not come up with the things, they will not able to grow. So the courage from within is important. So I'll give you my example. Like I am a mother of 2 kids. So like when I was pregnant, so my husband said that after this maternity leave and also you can leave the job. But yes, I want to grow in my career, because I think that being as a housewife job, like I would not be able to achieve my career goals. So I continued.
So like my elder one is now 6 years old and I'm still continuing the job because of my courage. I wanted to do something for myself, for my family, and for the surrounding. So that's why I continued working it. So it's a message for all the female that until and unless you will come out with your courage, you will not be able to be a successful. So it is a very important virtue for a woman leader also. Yeah, and the second question was related to spirituality. Yes, I do agree that spirituality also is too much important. Though we are talking about more of advancement and the scientists, scientific things and all, but somehow we are teaching to our kids also about this spirituality. We have 4 religions. So like 4 religions have different spirituality and they are following their own God and all. But still, somewhere I think that without spirituality also that we cannot achieve the goals and all because the inner strength, the power comes from that only. So I believe that yes, it should be there because there is a God power which exists here. Whether you accept it or not, yes, it is there. Apart from this scientific things also. So we should believe on this also as a woman leader, I think, yes. Thank you so much, Indu, for sharing. And I would request others to please come and share. Please. Definitely, spirituality is very, very important because when we go to the realm of religion, we get to the realm of opposition. So we can have opposite feelings, opposite concepts of God, opposite ideas of religion and dogmas and so on. But when we go to the area of spirituality, we concentrate our attention in whatever unites us, and religion divides us. So I think that spirituality is very important for us women to develop ourselves because, as I said before, we have to be together. We have to work together. Alone, no one will reach anywhere. There is a very beautiful saying in Africa, if I go alone, I can go very fast. But if I go together, I can go very far. So I believe on that. Isn't it, sister from Africa? Yes, Ubuntu. And other thing that it said that about what quality or you can have in each situation. And I think that it's a question of complementarity of virtues. Because you cannot say that one virtue or 2 virtues are sufficient. Each situation, each moment requires a different virtue. There are moments that it requires you to speak, and are moments that requires you to be quiet. There are moments that you have to go forward. There are moments that you have to stop off or even go back. So sometimes you have to be flexible, sometimes you have to be firm. So I think that it's just when we develop all these instruments, these various qualities, that we learn how to use each quality, each virtue in every situation, each moment. Do you agree? Yes? So thank you. Thank you so much, sister, for session, but she was kind enough to share your thoughts and virtues, and I'm sure it has added a lot of value to this dialogue. Thank you, Sister Hussein Lucia. Ben, and have a wonderful morning. Yes. आई वॉज लिस्टिंग और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता दूं तो ये दोनों आंसर्स उसमें इंक्लूड हो जाएंगे हाँ सो आई एम अ डॉक्टर एक्चुअली आज ना मेरी सुबह रेवाड़ी ओपीडी है इसके बाद भिवाड़ी 2 ओपीडी के बीच में स्पिरिचुअलिटी का इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरत ही नहीं है अगर किसी की ओपीडी 9 से 11 रेवाड़ी में है एंड देन दिस इज़ 10 to 1 और 2 to 5 भिवाड़ी है तो आई थिंक दीदी मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ और स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस कैसे करना है
दोनों को बैलेंस कैसे करना है। और मुझे उस वक्त आंसर 5 साल पहले जो मिला था वो अभी भी याद है, आपको बैलेंस नहीं करना, आपको स्पिरिचुअलिटी का ना ऊपर रखना है। एंड ये बहुत ज़रूरी है जो मैं आपका सबका सुन रही थी। तो राउंड्स पे एक एग्जाम्पल है, राउंड्स पे एक पेशेंट का सर्जरी हुआ, पार्किंसंस डिजीज में भी मूव, तो जैसे हार्ट में पेसमेकर डलता है और आप रिदम कंट्रोल करते हैं, वैसे ब्रेन का रिदम भी कंट्रोल कर सकते हैं। और जो अगर बीमारी के बिना उस रिदम को कंट्रोल करते हैं तो आई थिंक दैट इज़ मेडिटेशन, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो अगर बीमारी है और हम पेसमेकर से शेकीनेस कम करते हैं तो द सक्सेस वाज वेरी गुड इन द पेशेंट। तो राउंड पे मैंने पेशेंट को कहा कि आपका तो बहुत बढ़िया सर्जरी हुई है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट आई एम नॉट द डॉक्टर हु ऑपरेटेड, आई एम अ न्यूरो फिजिशियन नॉट अ सर्जन। तो द पेशेंट सेज कि हम तो डॉक्टर में भगवान को देखते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन कि अगर मुझ में भगवान देखते तो फिर मैं कहाँ देखूँ भगवान को। तो आई सेड हाँ, भगवान आप उनमें देखिए जो आपको ऑपरेट किया था। तो द पेशेंट कुड नॉट स्पीक इनिशियली, पार्किंसन में स्पीच अफेक्ट होती है, मूवमेंट होती है, तो सर्जरी के बाद ही वॉज क्लियर। तो पेशेंट ने राउंड्स पे बोला कि मैं भी भगवान हूँ, एंड इट वॉज लाइक अ स्टनिंग वर्ड कि 20 लोगों के राउंड्स में पेशेंट कहता मैं भी भगवान हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप भी भगवान है, पेशेंट में भी भगवान है, डॉक्टर में भी भगवान है, सब में भगवान है, लाइक बिकॉज आई हैड नो अदर आंसर। एंड यू नो ब्यूटीफुली ही सेड नहीं मैडम, मेरा नाम भगवान दास है। एंड यू नो बिकॉज आई एम इन अ डिफरेंट सिचुएशन, तो कई बार ऐसा होता है। तो ये जो वर्ड है ना भगवान, इनको मैंने बहुत खोजा। यू नो व्हेन आई केम इनटू स्पिरिचुअलिटी तो मैंने थ्योरी बहुत पढ़ा कि 4 बजे क्यों उठना है मेडिटेशन में, एंड आई गॉट अ आंसर कि जब सनराइज होता है एंड व्हेन यू आर सिटिंग एंड योर पिट्यूटरी ग्लैंड इज एग्जैक्टली एट 30 डिग्रीज विद द सन, एंड दैट्स द बेस्ट टाइम योर माइंड इज क्लस्टर फ्री, है ना। पढ़ाई भी सुबह ही करते हैं, and this is the reason whatever I learn I actually very quietly go back and see ये सचमुच सच है ना। and believe me, जितना जितना practice करते जा रही है ना उतना उतना you can see on my face, do you see I have a huge crowd, almost 50 का OPD किया है। the driver is sitting, उसका रोज़ा है। मैंने कहा भाई आप भी अंदर आ जाइए, मेरे रोज़े हैं। I said okay, थोड़ा premises में आ जाइए। so you know you balance everything, and I think the virtue, if you ask me very dynamically, she said ये ऐसा है कि जब आप पानी के समुंदर में अगर अपनी बोट चलाएंगे तो अगर मैं आपको कह दूं कि आप ऐसा चलाना वैसे चलाना, बट फाइनली एक स्टेज पे आप डायनेमिक ही तो करेंगे ना, आप बिल्कुल रिफ्लेक्सली करेंगे। अब ऐसा आया तो मैंने ऐसा किया, ऐसा। सो यू नो द लाइफ इज वेर एवर इज द बेस्ट सिचुएशन, आपको वैसा कंडक्ट करना है। और फीमेल्स हैव अ ह्यूज कैपेसिटी। अष्टभुजा देवी हम फीमेल्स को कहते हैं। माई एम फॉर द नेक्स्ट years, I have 2 talks in the upcoming this Women's Day. I want men to at least become Chaturbhuj or Shashtabhuj. Yeah, at least वो कुछ करें। To end my experience, I will give an example. I was in the OPD, एक मुझे फ़ोन आता है मेरे ब्रदर का खुद का, he is a lawyer. तो he says कि मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ, क्लाइंट के साथ हूँ, बट मुझे ना वॉक करते वक्त आई एम नॉट कम्फर्टेबल। दिस इज वेरी लाइव 4 days बैक, आई एम इन द OPD। I said, भाई ऐसा मौसम में why are you walking, इतनी गर्मी है ना, your cluster। Then he called me after 10 minutes, मैंने खुद का पल्स लिया and it is 41। I said, no, you're a jogger, he jogs 10 kilometer। मैंने कहा एथलीट का इतना ही होता है, but he called me, मुझे स्वेटिंग है। What I should say if I am spiritually connected, मैं पेशेंट्स के बीच में एक फ़ोन आता है, anybody who can answer, क्या जवाब देना चाहिए मुझे? ऐसा रैंडम कॉल आता है ना, तो मुझे क्या बोलना चाहिए? हाँ दीदी, प्रैक्टिकल 4 दिन पहले की सिचुएशन, गॉट अ कॉल कि मुझसे ना 100 मीटर भी नहीं चला जा रहा है, और ऐसा कभी नहीं हुआ, और अब मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा क्लाइंट के साथ, मैं घर चला जाता हूँ। सो इफ यू आर वेरी फोकस्ड इन योर लाइफ ना, दिस इज व्हाट आई विल टेल दीदी, आई गेट इंट्यूशंस, माई डिसीजंस इन प्रैक्टिस आर क्वाइट टू द एक्यूरेसी। जहाँ मुझे लगता है ऐसा नहीं, ऐसा वो सही। इफ़ यू आर वेरी फोकस्ड ना, आपका क्लटर, आपके पास इमेंस के पास। आई जस्ट टोल्ड वन थिंग, कम टू मेदांता। एंड ही सेज जो ऐसा बोला ना कम टू मेदांता, ऐसा आज तक तूने कभी बोला नहीं, माई रियल ब्रदर। सो हिज क्लाइंट ड्रोव इन 40 minutes, ही समवेयर ही हैड ड्रेड कि अगर कुछ ऐसे डिस्कम्फर्ट है ना तो चलना नहीं। तो उसने मुझे बोला मैं कार से नहीं उतरूंगा। आई सेड ओके, आई लेफ्ट माई पेशेंट हाफ वे, मैंने कहा व्हील चेयर लाती हूँ, नाउ जस्ट सी हाउ द सिचुएशन चेंजेस। व्हील चेयर पर बिठाया, आई सेड पेन है चेस्ट में? नो। लेफ्ट हाथ में दर्द है? नहीं। जॉगर है 10 kilometers 5 kilometers जॉगिंग तो ऐप में डालता है फैमिली ग्रुप में। आई सेड ओके विल डू। आई टोल्ड कार्डियोलॉजिस्ट, नाउ सी हाउ आई एम वर्किंग।
I told secretary, I'm just coming. एक था, come. ECG normal, echo normal. What does your inner voice say? If you're spiritually connected, you will have doors getting open to you. क्या बोलेगा अंदर से आवाज क्या आएगी? And don't tell me the God is telling, God has done cardiology, or sometimes God वैसे मैं कहती हूँ neurology में पढ़ते हैं, अब तो सारे ही subjects पढ़ते हैं. So my inner voice was telling, please get angio. And Medanta does not believe he is my brother. Card payment करना 75,000 you have to pay. My card is in the OPD. I went to OPD, patients चिपक गए. मैडम हम तो रुके, मैं कब रुको? The way you talk रुको, wait, you know, जो आपके चेहरे पे expression, जो आपके शब्दों के, things will move, patients will wait. कोई लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा. I took my card. They told me 75,000 I said, you take 1 lakh, fix my brother. You know, see the doctor is talking, fix my brother. We do an NGO for him and there is a major vessel block. And immediately doctor says to me, Dr. Chandra is a very good doctor, कि 2 स्टैंड डालेंगे. Imagine, तो क्लाइंट था वो कह रहा है ना ऐसा ही है डॉक्टर ने, 1 है 2 का बिल लगाएंगे, 2 बोल रहे. I saw 2 stand immediately deployed. Every story is done in 20 minutes. He is out and he says, now I am absolutely all right. So if you are very focused, आप अपनी हेल्थ की भी आवाज़ सुन लेंगे, अपनी लाइफ की भी आवाज़ सुन लेंगे, अपने फाइनेंशियल भी सुन लेंगे. आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है तो आप कर दीजिए, नहीं करना आपको पता चल जाएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं. सो लिसन टू योर इनर वॉइस. You can have to be, the virtue I will say is be very focused. Females have, or for that matter men also have immense capacity. इतनी नहीं. मैं कभी सोचती हूँ कि इतना सब कैसे होता है और उसका आंसर, I sometimes feel blood test कर लें अपना तो देखें ऐसा what is running. And I think that if you just connect. So if you treat anybody without a chest pain, without ECG changes, and to put a stent, it's ultra supersonic treatment. You get him back. The next day he did a video consult for his patient on the client. And then the client said, पता है हम तो वहाँ से वापस है, उस दिन जज भी छुट्टी पे थे. मैंने कहा देखो कितनी हेल्प होगी, आप जाते वहाँ प्रॉब्लम होती. So I think if you strongly believe whatever happens, happens right, you will have doors getting opened for the way you need to move. Thank you. Very, very beautiful. Thank you so much. It was a very, I think, a very encouraging story. And the fact that, you know, she is, of course, she told her schedule yourself. You've shared कि आप कितना work कर रहे हैं, अभी आए हैं in between और वापस फिर जाएंगे. और किस तरीके से focus हमारे family को, relationships को, health को बचा सकता है. And needless to say, you are a meditator for quite a long time. And by the way, I really like that 4 a.m. scientific explanation. Probably we'll get back on that explanation. But since we are running, this dialogue and the clock is running, I will request if there's someone else from this side or in front, if anybody wants to share it, or from here, कोई भी अपने views देना चाहेगा, how or experience बताना चाहेगा, even in short, it will be nice. My name is Chandra, and I'm from Canada. And one of the things that I would like to share, that when we talk about leader or leadership, and we see that it is in both men and women, and we're going through a period of time in this world today where women are having the courage now to come forth and be courageous, be that instrument of not only within their family circle, but also within the world. And this is what we need today for each person, each individual, women in particular, and as we're celebrating Women's Day, to see within the self and to see what qualities we have, and each woman, each person has all the innate qualities. And I think what I have done here is courage. Courage to look within the self and courage to use those virtues and qualities. And also, we have to have the courage to say no when we have to say no. If I don't in particular like certain things within society or within the life, I must have the courage. No, I am not going to do this. And one should not feel
I am abandoning anything or anyone by saying no, because self care is a very important thing today. And each one of us should look within the self, and because we know who we are, we know what our life is going through, we know what our soul and what our body, these five elements, need. So self care is very important. And also, we should not neglect children. Children should be given the opportunity to be listened to. Because one of the important things that I have noticed, and to share with you very briefly, that I'm involved in spiritual religious care in a pediatric hospital, and I deal a lot with children who are very sick. And when children are sick, the parents are also sick. When the child is okay, parents are okay. So I counsel a lot of children and a lot of families and staff as well. And when we listen to children with that compassionate listening, they are heard and they feel so empowered. Not only little boys and little girls, but they feel empowered and they feel within themselves that leadership from a very young age. If a child can say to the doctor, "Doctor, I'm not feeling well. There is something that is going on within my body." And the doctor is listening with that compassionate listening, not just listening with the ears, but with the eyes and with a smile. It gives so much courage to the children to open up. And I remember during the COVID time, we had to counsel a lot of parents because they were not allowed to be with the children at that time. And so imagine what that kid was going through. And so empowering everyone needs to be empowered. And women today, as we heard that from Sister Luciana about being that Shakti, we are all Shaktis. And so let us all together, men, women, children, society, let us bring forth that courage, that Shiv Shakti that we have within. When we are all connected with God, that activate, it brings out this Shakti within us. And this is where we can give that respect to each other, to men, women, and involve your children as well. So compassionate listening, self-service, and service to humanity is one of the greatest things that we can do today. We don't have time to listen to anything else. Everybody has a story. And yes, we do have to listen to their story. And we have to guide them in the right way. So thank you very much for having me here to share. Thank you. Thank you, Sister Chandra, for sharing your experience of being with the children, and thank you for that honest, that very sensitive thing with the children and the parents, right? So as we are coming to the closure of the sharing, is there anyone else who would like to share briefly, somebody who's not spoken? Hello, everyone. Welcome to International Women's Day. More power to us and to the men who are supporting the women here today. Thank you. So my name is Shika. I'm from Sydney in Australia. I'm just here visiting for a few days and then returning back for some training back to ORC. So it's a very interesting question and very things that we need to reflect on in terms of virtues. So firstly, I don't know if anybody here has heard of Simon Sinek. If you haven't, and you want to be in leadership positions, especially the youngsters behind, please Google Simon Sinek. So just in terms of my background, I've been in corporate for over 25 years. I've led many leadership positions as well in both banking, aviation, and IT sectors. So I've had multitude of experiences.
I started actually meditating about 2 years ago. So I'll give you a contrast between what I know in terms of challenges and what meditation and spirituality has taught me. So Simon Sinek basically said that leadership is not about being in charge. It's about taking care of those who is in who are in charge. As in, let me just repeat the quote a little bit better. Sorry. So it's not about being in charge. It's taking care of those in their charge. If that makes sense. Okay. Sorry, I just got a bit muddled up in my thoughts. Okay. So in terms of the first part of the questions, which is, do you think it's important to lead by virtues? To be honest, all my life, I haven't led through virtues, transparently, because I didn't know. In a male-dominated industry, and this is where the second part of the challenging part comes in, I thought I had to be a man to lead in a man-dominated environment. So it was all about aggression. It's about domination. And it wasn't through fear per se, but it was about having a louder voice, having authority. It was something that I saw the men around me do it, so I thought it was okay for me to do it. And it did get me results, but it was not results that lasted. So again, talking transparently, sometimes it was fear-based because I had the power and the authority. So that power and the authority kind of got them to do the things that I wanted them to do. But it wasn't self-sustaining. Only when I started the Raj Yoga meditation a few years ago, some of the concepts came into my mind. And yes, definitely, we think it's important to lead by virtues because, coming back to that quote, you do have to take care of those in charge, that you are in charge of. So if you are a nurturer, and women have that nurturing quality, so if you can lead through love, love being one of the virtues, then it will get you a long time result. Sometimes you are in a very driven corporate environment where you've got your bosses and your KPIs and your a stick from your bosses, so you have to then, but if you lead from love, then I think the team will actually respond better to you. So for sure, love. And if you can bring joy into their lives, joy is another virtue, because it was not just about a single virtue, but a multitude of virtues. If you can bring joy into the workplace, then people are definitely going to come and, because it's a pleasant environment. It's not about, oh my God, I have to go to work and I have a mean boss. It's about, okay, I actually enjoy the work that I do. So create a work-life balance which is full of love and joy. And of course, many other virtues come into this, which is tolerance and cooperation and accommodating, which is part of the power. So in terms of spirituality, in just conclusion, it definitely plays a very important role because it gives you that self-reflection and gives you time to think, gives you time to connect within yourself, that quiet space, and then you can make better decisions for you and better decisions for the team that you are responsible for. Thank you. Thank you so much for sharing honestly what happens, and thanks for that contrast of when you are using spirituality and when you're not. So thank you once again to each one of you who have been so honest and authentic and, open with sharing your hearts with this group. And I'm sure it gave us all a lot of food for thought for our own lives and how we can imbibe these virtues in our lives. And to move it towards conclusion, we have another very special soul sitting with us, Sister Deepthi. And so we welcome her to the group with a big round of applause. She is coming all the way from South Africa. So we have all the continents, right from Latin America to Australia to South Africa, Canada.
So she has been with the Brahma Kumaris for the last 40 years. So she has practiced meditation, she teaches meditations, and she leads and coordinates the activities in the Brahma Kumaris, South Africa. She has been part of doing services in the field of education, learning and development, and social and environment issues. So she also is very, very active there, and I've seen her taking and leading retreats, such as the Latin American retreat, which is happening. So she's part of that team, as well as we have something called the Call of Time retreat that we do every year in the Brahma Kumaris internationally, and she's also very much a part of that. So we will request Sister Deepthi, who has been here very patiently listening, to share her thoughts and the conclusion of what you think this dialogue leads us to. Sister Deepthi. It's lovely to meet everyone. Every day has held a beautiful flavor being here at the retreat center. I think no matter what we are all involved in, at the end of the day, when we hear from each one here, it's a personal journey, isn't it? It's a journey of personal commitment as to what I stand for. Because ultimately what I stand for is going to be how I lead. Many times in our life's journey, I don't lead through what I know, I don't lead through what I have, but I have the greatest impact by what I am. And so it's a beautiful moment just hearing in the different ways about the whole aspect. And I was thinking, even growing up in South Africa, there's a lot of violence, the situation is becoming more and more delicate, extremely delicate. And who is it that are actually holding the energy? Even during the time in the apartheid years in the country, when there was so much violence, who was it that held things together? It was the grandmothers. It was the feminine energy that created a stabilizing moment. And their stabilizing moment wasn't from a space of known leadership, but their stabilizing energy was from who they were. And I think that is what spirituality is. When thinking about this question, spirituality is not separate from me. I am a spiritual being. And this is something that I need to always remember, that I don't need to be spiritual. I am spiritual. And what does it mean to be spiritual? It means to be connected to yourself, to be connected to the intrinsic qualities that you hold. And so when I lead through my true self, the one who's peaceful, and sometimes in meetings you really need to be peaceful. No matter, there's so much noise and egos that are all around you, that peace actually is such a calming energy. And whether moments need just love, because very often the noise out there is people need to feel recognized, they need to feel heard, they need to feel respected, which comes from our energy of love. Real spirituality means to be pure. And when the agenda is clean, there'll always be success. If there's a contamination in my thinking process, then I get varied results almost immediately.
I need to be stepping into my power. And what does it mean to be powerful? It means to be transformative. If there was no power in this room, you couldn't hear me through this mic. I was able to transform the volume of my voice for you to hear because there's power. Similarly, each one of us have a natural transformative energy. And I think this is what leadership is about. Leadership is about transformation, to be able to create that new field. And ultimately, I think we're in this life's journey because we should love life, you know. I always ask myself as a person, at the end of the day, did you live your day or did your day live you? Yeah? It's a frank question to ask yourself. Did I live my day today or did my day live me? And I think many times in our life, if we don't stay spiritually aware, our life is being lived for us. And a life that's being lived is never authentic. It's never powerful. It's never able to flow in that way. And so I think it's very beautiful when we can step into who we are, which is my spiritual context. And then when I have that spiritual context, automatically I lead through virtue. It's natural. I don't have to call upon virtue, because when I am peaceful, then naturally in situations I can be patient. Because sometimes in life's journey, we need to be patient. And if I'm not patient, I don't allow the real flow to happen. And so it's such a beautiful flow. I feel in life people only need 5 things, no matter who you are. People need to feel loved. People need to feel understood. People need to feel valued. People need to feel respected. And people need to feel safe. And if in any way we can activate these 5 beautiful flow of energies, which I feel I've used in my own life, but also in the work that happens, that when we are able to use this in a powerful way, we naturally bring benefit. And I think this is where we allow growth to take place. I think when we celebrate Women's Day, it's not just about being a woman, but it's about activating feminine energy. Because feminine energy is the energy of love, and the energy of nurture, and the energy of care, which every human being, whether you are male or whether you are female, the world needs right now. And so this is what, for me, if I look at South Africa, we celebrate, now it's International Women's Day, but in South Africa we have Women's Day on the 9th of August. And it's a very interesting time, because it was people who were interested in care, who stood up for the rights during the time of apartheid, which was the history of South Africa. And it was during that period of time of real struggle that they didn't just lead for people to be in front, but healing to be in front, love to be in front, the kind of energy. So when we celebrate these days and we allow beautiful dialogues like these to take place, we just have to ask ourselves, what am I bringing back to surface? What am I activating once again? And when I stay true to myself, I allow you to stay true to who you are. And together with that, we can find solutions.
Because otherwise people wear many masks and they hold many different flows, but they don't naturally find solutions. And so, really nice to be here. When I came here the very first time to South Africa, to India, I was 8 years old. Yeah? And I had arrived in Mumbai, and it was in the middle of the night, and I just landed, and I cried so much. And my mother asked me, "Why are you crying?" And I said, "I don't know. I cried so much because this is my land. Even though I may not have been born here, even though I don't have a direct connection, because my forefathers used to be from India, but I don't have a family that I can go to in India that is physically, but it's my home. And I think when we talk about Women's Day, India speaks a lot because it's Bharat Mata. Thank you, Didi. It's wonderful, not just your experience, but the whole concept of living with spirituality and living by spirituality. It's not an effortful journey that we have to do. We only have to just understand who we are, and then everything else is quite effortless and freely flowing. And for a leader, this effortless, free flow of energy is very important. Imagine for everything, if you have to put in effort, you get so tired at the end of the day. You do not have anything else to do. So for a leader, this effortless flow of energy that comes through spirituality is very, very important. And we will continue with the program. We have some very experienced sisters with us who will also share their experiences. And they have been observing and listening, and I would now request them to share some of their experiences, how the leader within, how they found the leader within, and how they could actually inspire others to know themselves and to actually do something for the society on grounds. Sometimes we find it so hard to just be ourselves and work for ourselves, but they have actually inspired others to join them. And so first I would like to request Sister Shweta Rai Talwar, who is a postgraduate in human rights from the Shanti Niketan and Stanford, and has worked at international levels for women rights, human rights, social causes, not just women, but everything else. She's worked with personalities who are with worldwide fame, and she has received immense applause and appreciation for that. She's also worked for the International Labour Organization, WHO. She's traveled to different countries, United Nations, countries like Bangladesh, and where these things are quite much needed. And she has a lot of awards to her accolades. She has received the awards from His Holiness the Dalai Lama as the International Youth Icon. She is the Uttarakhand Gaurav, the pride of Uttarakhand, and she holds the positions of the Chapter Chair Social Work Dehradun, National Joint Secretary of All India Women's Conference, and a lot of other committees. And not to take much of her time, but would like to listen from your experiences. Om Shanti. Namaskar. Very good afternoon. Thank you so much, Sister Vidhatri, for your introduction. Sometimes these introductions, of course, kuch zyada ho jata hai, but since we have youngsters here, maybe I'll delve into it a little later, to create our identities. कभी कभी ऐसा होता है हमारी आइडेंटिटी को शायद हमें पहचान बनाने के लिए ये भी शायद कभी ज़रूरी हो जाता है. But to begin, I would like to say, of course, I wished everybody, यहाँ का जो energy और atmosphere है, it is so much charged with divinity and positive energy, and a lot of caring, and of course a lot of sharing. The peace here is engulfing and encompassing. The energy, how is it created,
The energy is created here because of the persons who are living here. The sisters here are inspired, I think, from the leaders within themselves, within their souls. That is what I feel is very, very important. And I am planning to take up the Raj Yoga meditation in a very serious way. It is these values which are inculcated either by our parents. हमें जो भी संस्कार पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरी छोटी बहनें, मेरी बेटियाँ सब यहाँ पर हैं, मैं आपके लिए ये ज़्यादा बोलना चाहूँगी कि जो भी हमें संस्कार पढ़ते हैं, वैल्यूज़ पढ़ते हैं, ये कहाँ से आते हैं? इट इज़ आइदर आवर पेरेंट्स और हमारे आइडल्स हैं लाइफ में. लाइक मैं मदर टेरेसा को बहुत आइडलाइज करती हूँ. And of course, Sarojini Naidu, because I am the Joint Secretary All India Women Conference, she was our 4th president, so I will speak about her also a little bit. और एक हमारे गुरु हमें बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन, डायरेक्शन देते हैं, and it is with these values, the core value system we are as a person, that is what will help us carve a path or a niche in the world, in society, in life, and also within ourselves. हमने रहना किसके साथ है? We have to live within us. We have to be comfortable with whatever we think and whatever we do. The society, people, persons, it comes later. पहले हमें अपनी आत्मा के साथ चिंतन करना पड़ता है कि जो मैं कर रही हूँ, जो रास्ता मैंने लिया, मैंने ठीक लिया या मैंने गलत लिया. मेरी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी रही, काफ़ी मतलब एवोल्यूशन रहा. I will get to that also in a moment. अच्छा, वुमेंस डे, हमने वुमेंस डे पर हमने क्यों, वाई शुड वी जस्ट टेक वुमेंस डे के पर ही हम इतना क्यों चिंतन करते हैं महिलाओं के मुद्दों पर? दिस वॉज स्टार्टेड अबाउट 109 years ago. उस टाइम यहाँ पर फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स थी, इट वॉज वेरी इन ह्यूमन कंडीशंस जिस पर वो काम करती थी. सी वी हैव स्लोली ब्रॉट दीज थिंग्स इन टू शार्प फोकस. द वर्ल्ड हैज़ इवॉल्व. आप लोग भी सब जैसे एक वर्क के फैक्ट्रीज से और जैसे वर्क से आई हैं, तो कुछ चेंजेस हैं, बहुत कुछ फ़र्क है. पहले ऐसा नहीं था, बिकॉज दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली एट ऑल. सो दोज थिंग्स आई फील आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वुमेन्स डे ब्रिंग्स इन टू शार्प फोकस आर नीड्स फॉर इक्वालिटी, आर नीड्स नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड, नॉट टू बी स्टिग्मेटाइज्ड, एंड ऑफ कोर्स वायलेंस. वायलेंस तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए. किसी भी उम्र की औरत हो, चाहे वो एक बच्ची है, चाहे वो टीनेजर है, चाहे वो एक सीनियर सिटीजन है. स्पेशली women are at such a biological disadvantage that violence is always comes into the forefront, you know. And violence का एक ही रूप नहीं है. Mental violence है, emotional, physical violence. So abuse and violence, we know it is domestic violence. जो घर में हमारे बिल्कुल करीब होंगे, वो भी हमको इतना subjugate करके रखेंगे, क्योंकि वो power balance है. Basically ये violence आती कहाँ से है? मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में पावर बैलेंस होता है कि हम स्ट्रांग हैं, हमें इसको सब्जुकेट करके. एंड दिस इज, आई हैव वर्कड विद ILO. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट हाउसवाइव्स, इट इज़ अबाउट women who are working, who are in very senior positions, are subjugated to this, and it is worldwide. It is such a grey area. कई बार ये बातें इवन डेवलप्ड कंट्रीज में, बाहर अमेरिका में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है. बट हम लोग इंडियन कल्चर में थोड़ा इसको एक फैमिली मैटर समझ के वी स्वीप इट अंडर द वायलेंस. जो घर में वायलेंस है, मतलब इट इज़ नॉट ब्रॉट इन टू द फोर फ्रंट. हम कहते हैं कोई नहीं, घर की बात है, सुलझ जाएंगे, मैटर ठीक हो जाएंगे. तो ऐसा बहुत कुछ होता है. कन्या भ्रूण हत्या होती है हमारे यहाँ पर. यंग मेरी बहनें और बेटियाँ हैं. मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी, एक टॉपिक है बहुत स्ट्रॉन्ग. ऑफकोर्स लीडरशिप पर तो हम बात करेंगे ही, बट ये मुद्दे हैं. कन्या भ्रूण हत्या हम कहते नहीं, हम तो नहीं कर सकते. See, the statistics have shown education level of women in India has increased, but the level of female feticide has not decreased in proportion. Female fighter से क्यों हम कर रहे हैं? Patriarchal society है, बेटा हमें son preference है. And most of us always feel, especially जो पहले की generations हैं, कि जब हमारा बेटा ही, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा है कि जब हमें आग हमारी उसको देगा, चिता को आग लगाएगा, तो तब ही हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग के द्वार नहीं खुलेंगे हमारे लिए. ऐसा है, बिलीव्स हैं ऐसी. फिर लड़की तो पराया धन है. सी वी फील दैट कि ऐसा नहीं होता, बट ऐसा हो रहा है. कहीं ना कहीं हम लोग ये भी अपने बच्चियों को कहेंगे, नहीं रात के टाइम नहीं बाहर जाना. हमने बेटों को क्यों नहीं कहते तुम मत जाओ, हमारी बेटियां सेफ रहेंगी? So it is always like that. It is our mindset which needs to be. If we are true leaders, we have to address those mindsets.
आई फील दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और स्पेशली जैसे हमारे हरियाणा में तो फीमेल फिटिसाइड काफ़ी ज़्यादा है. So it is very important to address issues like this, I feel. A strong woman knows she has strength enough for the journey, but a woman of strength knows it is in the journey where she will become strong. आपका जो भी आपकी जर्नी रहेगी, जो आपके चैलेंजेस रहेंगे, आप उसी से ही शक्ति पाएंगे. मैं तो अपने बारे में ये कह सकती हूँ, शायद मेरी जर्नी ऐसी नहीं थी जब मैंने शुरुआत करी. मैंने धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करा और मैंने ये शक्ति पाई. Since I'm also the Joint Secretary All India Women Conference, मैं आपको एक सरोजनी नायडू जी का एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी. She was our 4th president 1930. Nightingale of India इनको कहा गया. Why she was thus said? Because she could speak very well. She of course wrote beautiful poetry, but her life का जो है, if you read, it is very interesting, you know. जब वो शुरू की उसके बारे में बताते हैं, शी वॉज अ लाइजोम स्लिम गर्ल, मतलब वो एक लड़की थी, छरहरे बदन की, सुंदर बालों वाली, लंबे पतली चुटियाँ उनकी, इतनी खूबसूरत सी. और वो पोइट्री उस टाइम टीनेजर बनी तो लव पर लिखती थी. एंड शी फेल इन लव विद अ पर्सन हु वाज 15 years her elder and a Muslim. बट शी कंटिन्यूड विद हर ड्रीम्स. वो बाहर गई पढ़ने, तो वहाँ पर एक ग्लोबल लॉरिएट से मिली, साइमन गॉस से. तो उन्होंने उनको बोला कि आप इन चीज़ों पर लिख रही हैं, आप हिंदी, why don't you write on nationalism? आप अपने जो इंडिया के मुद्दे हैं, हिंदी के हिंदू के मुद्दे हैं, उन पे लिखिए. एंड सी देयर वेयर आई से डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे हमारे गुरु हों, चाहे बड़े हों, माता पिता हों, हमारे को जो सही अगर मार्गदर्शन होता है. एंड शी स्टार्टेड राइटिंग एंड देन शी बिकेम द नाइटिंगेल. She came back from there, and from then, how she transcended. She was such a beautiful, a lady in some ways, like soft as silk. उनकी poetry इतनी खूबसूरत है, कभी पढ़ें, and soft as silk and pearl, you know. और वहाँ से लेके वो patriotism तक उनकी life कैसे गई. 21 months she stayed in the prison with Mahatma Gandhi. उन्होंने हमारे independence movement में कितना भागीदारी ली. And finally, of course, she became the first governor of Uttar Pradesh, and after that she passed away. But उनकी भी writings में ये है कि उन्होंने बहुत कुछ पाया लेकिन खोया. उनको ये गिल्टी लगता रहा लास्ट तक कि मेरे फादर मुझे एल्जेब्रा पढ़ना चाह रहे थे कि मैं एल्जेब्रा पढ़ूँ, साइंस पढ़ूँ, और मैंने तो पोइट्री कर ली. So we women are always facing these things, you know. हम सबको खुश करने के लिए, जैसे अभी मैंने सुना कि हम अपना कितना कुछ खो जाते हैं. अपना, you know, our identities we sometimes not exactly lose, but I feel our identities are sort of not really brought to the way they should be, polished, and you know, जैसे हमारी virtues और qualities हैं, ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि हम यही करते रह जाते हैं. हम लोग बहुत कुछ खोते हैं अपने, जैसे for children, बच्चों के लिए हमें पीछे हटना पड़ता है कई बार कि उनके फ्यूचर के लिए, जैसे आपने बताया था कि women have to take these decisions. ऐसी बात नहीं. और मैं तो अपनी लाइफ के बारे में बोलूँगी. My journey has been very evolving, and I don't mind saying it from this platform because there are a gathering of wonderful women out here, and you know, I empowered myself. And you know, I empowered myself, I empowered women, so many other women. But I have been working on women rights, women issues. Of course, I've been working on all diverse issues. But women's issues are very close to my heart. Why they are close today? Because I started when I was very young. I was a teenager. मेरे पास कोई पढ़ाई नहीं थी उस टाइम. मेरे पास कोई गॉडफादर गॉडमदर नहीं था. मेरे पास कुछ बस ये था कि हाँ, आपको एक जैसे उसमें डाल दिया. What should I say? Sometimes as a cattle you can feel, or I don't know, because I love animals, तो animal rights पे भी काम करती हूँ, तो मैं ये भी नहीं कहूँगी गाय को खुंटे से बांध दो, ये भी कहना मैं ठीक नहीं समझूंगी. बट कई बार ऐसा होता है. उसके बाद मुझे लगने लगा कि भाई मुझे तो अपने लिए कुछ करना है. I have to create myself, and slowly, and see, I would also add to this कि हमने ज़रूरी नहीं है कि हमें हर टाइम बहुत रफ वे में आगे आना पड़ता है. स्लोली, सॉफ्टली, बड़ों के संस्कार रख के. और जैसे महात्मा गांधी ने कहा, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी. और स्मॉल थिंग्स, मतलब एक सपोज देयर इज अ ओशन, ये नहीं कि आप बहुत बड़ी चीज़ें कर लेंगे, आपको छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्रॉप ओशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो ड्रॉप नहीं तो ओशन कैसे बनेगा. सो मैंने भी अपनी लाइफ ऐसे ही शुरू करी. धीरे धीरे आई एम्पावर्ड माई सेल्फ, आई स्टडीड, आई डिड लॉट्स ऑफ कोर्सेज, मे बी अबाउट द वर्क्स. बट एक बात ज़रूर थी, एक जज्बा था. And there was a will, a determination that is very important, that I had to forge ahead. Determination थी और plus hard work.
हार्ड वर्क से हमको नहीं डरना, यू नो, दैट इज द मेन थिंग. इन टुडेज वर्ल्ड आई सी द यंगर जनरेशंस, वी आर सो मच इनटू मटेरियलिज्म. हमें सिर्फ मटेरियलिज्म में इतना ज़्यादा रह गए, ये चाहिए वो चाहिए, यू नो, द यंगर ग्रुप्स आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज फैमिली वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं और बड़ों का सपोर्ट, जैसे अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, कम होता जा रहा है. सो मेंटली बच्चे थोड़े से डिस्टेंस होकर मटेरियलिज्म में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं. तो दैट इज़ नॉट द आंसर. एपिंग द वेस्ट अननेसेसरली इज़ नॉट द आंसर, आई फील. Hard work is the mantra to key to success, I feel. Being punctual, being little values जो हैं, ये आपको बहुत आपके एवोल्यूशन में बहुत काम आती हैं और मेरे भी बहुत काम आई. और मैंने मतलब मैं कहूँगी एक छोटे से शहर की एक लड़की जो देहरादून से थी, मैंने यूनाइटेड नेशंस तक की उड़ान भरी और मतलब मुझे अच्छा लगा. इट सॉर्ट ऑफ आई फेल्ट ओके आई हैड अराइव्ड. सो ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए, सब यहाँ पर महिलाओं के लिए स्पेशली जो हमारी यंगर हैं, कि आप सपने ज़रूर देखिए, खूब सपने अच्छे देखिए, अच्छे सपने देखिए और उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करिए. ऐसा नहीं है. और इस बार का वुमेंस डे का तो खैर वही है कि एक्सेलरेट एक्शन फॉर जेंडर इक्वालिटी. सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव जेंडर इक्वालिटी. बहुत ज़रूरी है. और हम एज मदर्स अपने बच्चों को, स्पेशली अपने बच्चों को, सन्स को ये संस्कार डालें दैट वी हैव टू ट्रीट मेन एंड वुमेन इक्वली. That is very, very important, that there should be no this thing that, especially I'm talking about the South Asian context, more than the other countries. It is very important that we are very fair and square and we teach our children to treat women as equal partners in society and valuable partners. So it is like that, and I feel जो भी आप करें वो बहुत सारे प्यार के साथ करें. Compassion, love is very important. मदर टेरेसा ने भी कहा था बहुत बड़ी चीज़ें ना कर सके, but you can do small things with a lot of great love. So yes, love, compassion, and a spiritual practice. And spirituality is not religion. Of course, we all know religious तो रूढ़िवादी वो religion तो हमको divide ही कर रहा है. कुछ spirituality हम सारे universe को एक साथ लेके आती है, and that is the way we can gain world peace. We have to move away from practices which divide. चाहे वो सोसाइटी को डिवाइड, फैमिलीज को डिवाइड करें, सोसाइटीज़ को डिवाइड करें, इन द लॉन्ग पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करें. एक पीसफुल, कंपैशनेट, प्यार भरा लव इज़ द की. एक हम संस्कार का एक संसार का निर्माण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और मैं अपनी बहनों ब्रह्म कुमारी सिस्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ फॉर ऑल दैट वी लर्न टुडे. वी डेलिब्रेटेड. And all my other fellow, I would say all the ladies here who shared their experiences, they were valuable, they were very interesting, and we are always learning. मुझे लगता है कि मेरी जर्नी तो अभी शुरू ही हुई है. मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, अभी मैं बुद्धिज़्म कर रही हूँ, मास्टर्स इन बुद्धिज़्म कर रही हूँ. मतलब मुझे लगता है सारा टाइम बस पढ़ना है. There is yet more to learn. So I feel that thing within us we should keep alive. कि आगे आगे हमें चलना है, सीखना है. एक inquiry, bent of mind of inquiry is also very essential. So I thank you very much. Thank you so much, and that's all. Om Shanti. Thank you so much, Sister Shweta. You came all the way from Dehradun. And so ये हमारा आज का वुमेंस डे तो ट्रूली इंटरनेशनल है. हमारे पास सभी कॉन्टिनेंट्स से पहुँचे हैं, लेकिन आप भी हमारे बीच में इतना दूर से चल के आए हैं खास इस प्रोग्राम के लिए. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस. एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट सिस्टर डॉक्टर एडवोकेट प्रियंका अरोरा जी. She is with us. She's working with the Ministry of Law and Justice, Government of India. She's also working as a local commissioner at the Debt Recovery Tribunal 3. And she is doing tremendous work, and not just in her field of law, but also in the field of social work. She has made several world records. She has received appreciation from eminent personalities, including the K.G. Balakrishnan ji, who was the former Chief Justice of India, and who later became the chairperson of the National Human Rights, and different other awards and medals. She is also working from district to Supreme Court as her law practice, and she's also the president of the United Nations Welfare Foundation for all her social work that she does. So thank you, sister, for coming here despite all the traffic but finally reaching here. And we would request you to also share in brief your experience and your message today. सभी को नमस्कार, ओम शांति. और सभी दीदी का धन्यवाद, उन्होंने मुझे मंच दिया और यहाँ पर मैं आई. आज अपने विचारों को हम सब एक्सचेंज कर रहे हैं.
तो बीइंग एन एडवोकेट हम न्याय को लेकर के ज़्यादा चीज़ें करते हैं, केसेस देखते हैं महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है या जो उनके साथ गलत होता है इन पोक्सो मैटर, इन रेप केसेस, तो हम वो भी डील करते हैं। और जैसा कि अभी मैम बता रही थी फेटिसाइड और जेंडर इक्वालिटी के लिए, तो मैं यही बताना चाहूँगी कि वीमेन इंटरनेशनल वीमेन डे जो बनाया गया है वो जेंडर इक्वालिटी को फॉर्म करने के लिए बनाया गया है। ये मेन पर्पस है इसको बनाने का। तो इन्होंने बहुत अच्छा एलोबरेट किया है, काफ़ी सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। तो जेंडर इक्वालिटी के लिए अभी हम लोग जितने सिटीज़ में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर महिलाएं अच्छे से पढ़ रही हैं, जा रही हैं, तो यहाँ पे लगेगा सब इक्वल तो चल ही रहा है। बट कहाँ पे इनइक्वालिटी आ रही है, वो हमारे विलेजेस में जब आप जाके विजिट करते हैं तो वहाँ पे बहुत इनइक्वालिटीज़ हैं, जिसको सभी चाहते हैं कि वो भी इक्वल राइट्स में आए। जहाँ पे बहुत सी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, अशिक्षित हैं, और जो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने घरों के अंदर ही रह रही हैं और अपने फैमिली के अंदर एक इमोशनल ट्रैप बोलती हूँ मैं उसको, जो कि एक इमोशनल टॉर्चर है, जो मैम ने भी एक्सप्लेन भी किया था। तो जो वायलेंस होती है हमारे यहाँ पे फिजिकल वायलेंस भी रहता है, मेंटल असॉल्ट भी रहता है, दैट इज़ अ इमोशनल टॉर्चर, जो कि आपको मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि आपके साथ इमोशनल टॉर्चर हो रहा है, बिकॉज यू आर इन लव विद योर फैमिली। तो आप उसके साथ वो इमोशनल मतलब बैलेंस से अलग हट जाते हैं उससे, तो दैट हर्ट योर इमोशंस। तो वो एक इमोशनल मतलब वायलेंस होता है एक। इस तरीके से एक इकोनॉमिकली हरासमेंट भी होता है, जब महिलाएं घर में रहती है जो अशिक्षित है, उनको घर में चलाने के लिए भी पूरा खर्चा नहीं मिलता, जिसके लिए हम कोर्ट के अंदर उनको न्याय दिलाने के लिए मेंटेनेंस के केस भी फाइल करते हैं, ताकि उनको और उनके बच्चों को सरवाइव करने के लिए कुछ मेंटेनेंस का अमाउंट उनके फैमिली से, उनके हस्बैंड से उनको मिले। आफ्टर मैरिज ये चीज़ें भी आती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस भी करते हैं हम। और जो गांव के अंदर जो हालात हम देखते हैं, बीइंग मैं सोशल वर्कर भी हूँ, तो हम लोग जब विज़िट करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी पिछड़ी महिलाओं को देखते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी शिक्षित महिलाएं हैं वो अशिक्षित महिलाओं को सपोर्ट करते हुए उनको शिक्षा की ओर लेके जाएं, उनको कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध करवा के उनको भी इक्वल स्टेटस पर लाया जाए समाज पे। ऐसा ना हो कि हम शिक्षित महिलाएं तो आगे बढ़ती जा रही हैं और पिछड़ी हुई महिलाएं पीछे ही ना रह जाएं। तो हमें उनके लिए भी काम करना है। तो आज जो हम डिबेट कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं एक मतलब यूनाइट होकर के जो जहाँ पर भी जाएं, जहाँ पे उनको लगे कि कोई महिला पिछड़ी हुई है या कोई ऐसी लड़की दिखे कि जिसके ऊपर लग रहा हो कि इसके एक्सप्रेशन ठीक नहीं आ रहे, तो वो आप उससे बात करें। क्या पता वो क्या चीज़ सफ़र कर रही है जो वो बता नहीं पा रही है समाज के अंदर, उस चीज़ के ऊपर नोट करना चाहिए इन चीज़ों को। ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है, अगर हम अपने आसपास देख के चलें तो बहुत सारे चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे कानून ही आएगा ठीक करने के लिए, हम इस तरीके से भी इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ पोक्सो के मैटर होते हैं, तो कई बार ट्यूशन से बच्चा पढ़ के आ रहा है या बाहर से आ रहा है, तो उससे उसके हाव भाव देखें, उसके एक्सप्रेशन देखें, उसको देखें कि उसका ट्यूटर का बिहेवियर उसके साथ कैसा है, स्कूल में कैसा बिहेवियर किया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो महिलाओं को, बच्चों पे भी ध्यान देनी चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए होती है। और इक्वालिटी के लिए तो हम अपने संस्था की तरफ से भी महिलाओं के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। उनको लीगल अवेयरनेस कैंप भी लगाते हैं, हम जागरूक करते हैं उनको उनके अधिकारों के बारे में। जैसे ह्यूमन राइट्स के लिए भी है, तो उनको फंडामेंटल राइट्स क्या है उनके, वो कौन कौन से केसेस में अपना राइट ले सकती हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है एक हमारे यहाँ पे कानून में कि महिलाओं के लिए पुरुषों से ज़्यादा कानून महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। और ये इस बात को भी रेफर करता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार भी ज़्यादा हुए, इसलिए उनके लिए कानून भी ज़्यादा बने हैं। कई बार हमारे पास पुरुष के केसेस भी आते हैं, मेल पर्सन्स भी आते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैम आदमियों के लिए कोई कानून ही नहीं है, कोई भी लेडी आएगी हमारे पर केस करेगी और वो अपने राइट ले लेती है, घर में हो, खर्चे का हो, बच्चा का हो, तो हमारे पास क्या अधिकार है। तो वो इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी में जो अब हम देखते हैं, तो ये जो लैप्स है एक चीज़ का, तो ये महिलाओं के लिए है। महिलाओं के साथ कम चीज़ें उनको प्रोवाइड हुई हैं सोसाइटीज़ में, तो उनके साथ बेसिक चीज़ों के लिए प्रोवाइड करने के लिए कानून उस तरीके से इस्टेब्लिश करे गए हैं, तो जो उनको फेवर में, जो उनको सपोर्ट करे।
तो इस तरीके से बहुत सारे राइट्स आते हैं, उनको रेजिडेंशियल राइट है के लिए फ़ाइट कर सकते हैं, मैट्रिमोनियल राइट्स जो भी रहते हैं उसके लिए है, गार्जियन एक्ट के लिए उनके लिए है, डोमेस्टिक वायलेंस उनके लिए है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे को राइट अधिकार दिए गए हैं कानून के जो महिलाएं अपने कर सकती हैं। बट ये भी वही महिलाएं करती हैं जो शिक्षित है या जिनको जानकारी है। बहुत सारे विलेज में और स्मॉल टाउन से जो फीमेल्स होती हैं उनको नहीं पता होता उनके राइट्स क्या हैं, वो पूरी लाइफ अपनी उसी में ही निकाल देती हैं। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और एक बीइंग अ फीमेल, और एक मैं चीज़ बोलना चाहूँगी कि जैसे हम भाई पुरुष प्रधान देश में ही रहते हैं, ये तो सब मानेंगे ही। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स पे जब आप मीटिंग्स के लिए जाते हैं या आप वर्किंग वीमेन जब आगे बढ़ने लगती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ लोगों के नेगेटिव विचार भी आने लगते हैं कि ये इतनी आगे क्यों जा रही है, ये कैसे हो रहा है, या कुछ प्रॉब्लम या मतलब कोई चक्कर तो नहीं, कुछ इस तरह के र्यूमर्स भी आते हैं। तो कभी भी उस चीज़ के लिए मैं अपना एक पर्सनल सजेशन सबको यही देती हूँ कि आप अपने पाथ पर आगे बढ़ते जाइए, जिसको जो कहना है कहने दीजिए, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे जाइए और अपने असूलों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। जो भी आपके अंदर का कॉन्शियसनेस जो आपको बोलता है उसको फॉलो करते हुए जाइए, वेदर यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी और नॉट, दैट डजेंट मैटर, बट आप अपने आप को अंदर से फॉलो करते हुए चले। तो इसके ऊपर मैं 2 लाइनें भी बोलना चाहूँगी कि असूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, असूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप जब भी अपने कॉन्शियसनेस को लेके चलेंगे ना, आप जिंदा हो अंदर से तो आप जिंदा ही रहो, अपने आप को मार के आगे मत बढ़ो। आई होप यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स कि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे सभी महिलाएं शिक्षित हैं तो अच्छे से समझ सकते हैं, और आसपास की जो सराउंडिंग में महिलाओं उनके ऊपर भी थोड़ा विशेष ध्यान देके उनको भी सपोर्ट करें, ये हमारे साथ हमें ज़रूर करना चाहिए। जी, थैंक यू। वेरी इंसाइटफुल कि हमें इसकी भी जागृति होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी हमें पता होना चाहिए। और जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि इनका भी लाभ वही ले पाते हैं जो शिक्षित होते हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसका लाभ सभी ले सकते हैं, शिक्षित हैं या नहीं हैं, वो है अपनी अंतर जागृति, सेल्फ अवेयरनेस। और कोई भी लॉ तभी काम करेगा जब कुछ हो चुका है, लेकिन कुछ हो ही ना और ऐसा समाज बन जाए, आप क्या समझते हैं वो समाज अच्छा है जहाँ बहुत अच्छे से पुलिस एक्टिव है, कोर्ट्स एक्टिव है, या वो समाज अच्छा है जहाँ पुलिस ही नहीं है, कोर्ट ही नहीं है? कौन सा समाज अच्छा है? राइट क्योंकि इतनी अच्छी सोसाइटी बन चुकी है कि वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है कोर्ट की। ऐसे ही इस शहर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ भी ज़्यादा ही हो रही है, राइट। और ऐसी दुनिया जहाँ पे हमें ज़रूरत ही नहीं पड़े लॉ की, जहाँ हमें ज़रूरत ही नहीं पड़े किसी ऐसी चीज़ की, क्या हम ऐसी दुनिया का निर्माण नहीं कर सकते? उस दुनिया का निर्माण करने के लिए हमें थोड़ा सा अब अपना फोकस उस दुनिया की ओर, हम इस दुनिया के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं और उसके अंदर ही हमें अपने आप को इक्विप, क्योंकि अभी तो यहाँ रह रहे हैं तो इक्विप हमें करना है, लेकिन यहाँ रहते हुए हमें तैयारी करनी है उस दुनिया को क्रिएट करने की। और वो दुनिया क्रिएट करने के लिए राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हमारे अंदर परमात्मा वो डिविनिटी भर रहे हैं। जब तक हम डिवाइन नहीं होंगे, हमारे सराउंडिंग्स के अंदर वो डिविनिटी नहीं आएगी, वो वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो God cannot give value to this table or this flower. He has to first give the value to me, ताकि मैं उसको properly use कर सकूं। जैसे कोई व्यक्ति के टेबल से, उसके वार्डरोब से, उसके कमरे से आप बता सकते हैं कि ये व्यक्ति ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं। उस व्यक्ति की चॉइसेस से आप बता सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। तो क्यों? क्योंकि जैसे हम होते हैं अपने सराउंडिंग्स को भी हम वैसे ही बना देते हैं। तो आज हमने इस समाज को भी ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि हम ऐसे अंदर से बन गए। और हम जब अपने अंदर से अच्छे बनेंगे, when we will be able to live with values, when we will be able to live with that compassion and love for everybody, when we will have peace inside, when we will have love and equality for every other being, not just males, not just female, in fact every other being, pashu, pakshi, animals, birds, nature, everything, the 5 elements on which we thrive, do we have respect for them? Or are we exploiting them?
We have exploited them to the level that they can now no more support us. So when we have that love and compassion and equality for everything that I can see, I can sense, I can smell, that is the time that I can really contribute something. Otherwise, we always think of ourself, our life, our family, our job, our rights, our responsibilities. वो आय की दुनिया से बाहर निकल करके, which Sister Luciana was sharing, that women leadership through spirituality shifts us from I to we, so that we encompasses not just my family and my work, but also it encompasses the whole universe. So the root of spirituality lies in who I am. If you look at this body, and if you think that you are this body, everything that you will do will be to sustain the body. If your body needs this chair, you will, and if somebody else is on this, you will what, ये कब उठेगा और मैं कब बैठूं? If the body needs love, it will always be physical love. If body needs peace, it will always be sab chup ho jao. Everybody will become silent, only then I will have peace. If body needs power, it will always be physical power. This is the consciousness when I think that I am this body. But the spiritual fact tells us that I am not this body. I have only taken this body as a medium to express myself, but I am that inner being, that soul in the body. So if I start thinking as a soul, I can value each soul. I know that I can never die, so I am not insecure, I'm always safe. I know that I'm not these tags, I'm not educated and the other person is less educated. I'm not this, I don't belong to this country, the other person belongs to that country. No. As a soul, we're all the child of one God. We may be born anywhere. We may be following any tradition. We may be speaking any language. We may be having any preferences of food or whatever. But we know that we all belong to that one. So when we understand ourselves and when we understand whom do we belong to, we can very easily connect to each other at that level. We can very easily understand each other at that level. It is not difficult for us to maintain that understanding with the whole world if we believe that this world is my family. And this is the basic concept of Bharat Vasudhaiv Kutumbakam, and this is the basic consciousness that we in Brahma Kumaris have for each other. And this is how those qualities can actually come into practice. And because these qualities, you no longer see those qualities around you. So one who has those qualities naturally becomes an effortless leader. So for you to become an effortless leader, you don't have to work on others. You only have to work on yourself. And that work on the self that we do is Raj Yoga meditation. So through this program, through this event today, we would like to invite all of you to experience that inner peace, to experience that inner connection with the Supreme, to experience that inner connection with everybody else by knowing who you are and experiencing who you are. So one experience opens doors to other experiences and naturally makes an experienced person ahead of others who are still doing a lot but seeking that experience. हम कितना भी लाइफ में कर ले, लेकिन अंततः हमें क्या चाहिए? शांति. तो अगर कोई शांति में रह कर के कर पा रहा है, तो naturally that person emerges as a leader. आप कैसे कर पा रहे हैं? And our decisions and other leadership qualities of influencing others, leadership qualities of making the right decisions at the right time, leadership quality of being able to support what's right, leadership qualities of recognizing the qualities of others and making them into practice. ये सब qualities तभी आ पाती हैं जब हम अपने उस आय, जो लिमिटेड आय है,
जो कि हमारे शरीर से बंधा हुआ है, उससे हम बाहर निकल पाएं. So we have our centers. Wherever you are, we have our centers where you can walk in freely and fix up a time for yourself, and in a week's time you will be able to understand who you are. What is your relationship with the Supreme, with God? What is your relationship with everybody else? And how this knowledge can transform you. So I invite all of you to have that experience at our centers, or you can come here to have that experience. और अभी आप सभी को 5 मिनट के लिए वो एक्सपीरियंस हम कराना भी चाहेंगे. आप सभी करना चाहेंगे? Would you like to have that experience? Yes? Okay. So let us all be very calm and composed wherever we are. This practice of Raj Yoga meditation does not need a lot of physical preparation, but yes, mental preparation. Right? It is a journey of the mind. If I tell you, being seated here, just go to your home, open the door, enter into your living room, look at the furniture, look at the people, go to the balcony, look at the sun. Just stay there for a moment to feel the light and warmth of the sun. It is so easy to go to your room, to go to your home, to experience things that you have already seen, to meet people whom you've already met or whom you already know. Now, let me go on another journey, a journey that I have not explored yet. I realize that even when this body is sitting in this room, apparently doing nothing, there is so much happening inside the body. Just look within. And as I look within, I find my heart is beating. My lungs are inhaling and exhaling. I see that the blood is gushing through my blood vessels. All my body parts are working in perfect synchrony. Who is making them do this? Without lifting a finger. Who is making this happen? And I can feel the presence of an energy within the body. It is not this body which is doing it by itself, but I focus my attention at the center of the forehead, inside the brain. There is a little star, a tiny point of light. The epicenter of energy which is flowing throughout my body. I see that star whose light is spread throughout the body. I recognize this is the Master. And gradually,
I feel that I am the star. Look at yourself as the star, sitting at the center of the forehead. Now I, the star, this energy, the soul, I travel to my home. Just as the body went to body's home, the soul is now going to its home, which is a world of light. Feel that I am the light, entering into a world of peace, a world of light. As if I have dived deep into an ocean of light. Everywhere around me I can only see light and other souls floating in this light. In this world of light, I see God, the mother, the father, everything of the soul shining bright. Just like by looking at the sun, I could feel the light and warmth. I look at God, the supreme being of light, who is the ocean of peace. And I experience His peace surrounding me, absorbing me, filling me, and making me His child of peace. Wrap yourself in this light of peace from the supreme light. So that I cannot be affected by the surroundings, which may or may not be peaceful. But I fill myself with this peace. Come back in this world once again at the center of the forehead, in this body, being a star, a point of light, a point of peace, radiating peace to my surroundings. No matter what the situation is, from within, I am always peaceful. And I have that power to transform situations into peace. Experience that I, the being of peace, am radiating peace into my surroundings. All around me,
There is peace freely flowing from me. I am peace, and I create a world of peace around me. Om Shanti. Om Shanti.